Assistant Professor, School of Electronics Engineering, Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the eminent guest speaker, Dr. Kar, for this session. He received B.Tech degree in Electronics and Communication Engineering from Pondicherry University in 2009 and MS by Research in Signal Processing from NIT Trichy, India in 2013. He has 8 years of teaching experience at KIIT deemed to be university. Major research areas of interest are signal processing, artificial intelligence, and IoT. He holds the responsibility for the Design Thinking Lab and Microchip Center of Excellence in the field of embedded system, IoT, and ML. He has more than 15 research papers published in different international conferences and journals, including 4 patents filed in different fields of interest. He also works as an active industry engagement cell member and developed multiple modules of engagement, including consultancy, curriculum development, and laboratory setup. He has also been granted BIG Biotech Ignition Grant by the Department of Biotechnology for artificial intelligence product development in the dental healthcare field. I also extend my cordial welcome to respected Principal Professor Lalima Singh, Vice Principal Dr. Meenu Agrawal, IQAC Coordinator and Vice President of IIC Dr. Manjari Shukla, all faculty members and students who are present here to attend this session. The theme of the session will focus on the developing online repository for business plan, which is a very new topic for all of us, and it will include more issues to address the full aspect of the topic. I wish this session enlighten us all and provide us with approaches to deal with the problems of tomorrow. Now we request the Honorable Sir to address the gathering and cast the light of his knowledge upon us. We would be delighted with your expertise and knowledge in every way possible. So without consuming any time, I would like to invite Dr. Kar to enlighten us. Welcome, sir. Sir is not audible. So your voice is not audible, sir. Am I audible now? Yeah. Yes, sir. Now you're audible. Okay. Sorry. Thank you, the whole team of SS Khanna for the warm welcome and the invitation. And so, though when I was approached for this topic, though we are using online repositories in our universities for a lot of activities, this is a very new field for me also, but I have experience in doing those kind of things. So I would like to say whatever my experience is this kind of repository to the whole system, right? So we have given a time slot of 1 hour, so I will try to cover as much as possible. If time permits, I'll try to showcase the softwares and everything used. But if not, then we can arrange someone in different sessions for that also in near future. Okay, so on this note, let's start the session today. So let's try. So what is overview of my presentation or session? What is a repository? So repository क्या होता है? फिर importance of repository, why we need, क्यों चाहिए हमें? What are the different types of repository? क्या क्या अलग अलग तरीके के repositories है हमारे पास? उसके अलावा and one of the foremost topic I want to emphasize that institutional repositories, that means universities में repository की requirement क्या है? और institutes में repository क्यों होना चाहिए? Because government of India from 2013 onwards has given a lot of effort on this to make institutional repository. And yeah, if you go universities across world,
they have now open their repositories to access different kind of data, different kind of research journals and everything. Then we'll see ki what are the platforms kya hai, what are different type of platforms are there, what are different type of softwares are there which can be used to create a repository. Okay, so let's start with a very basic note, right? What is a digital repository? Right? What is a repository? So आप लोग library use करते हैं, right? So if I am not wrong, सबको library क्या है पता है, correct? So a digital repository is basically an online archive of storing digital assets. Okay, digital assets का मतलब क्या है? Everything which can be digitized. That means you can store in a computer. आप computer में store कर सकते हैं. आप computer में क्या store कर सकते हैं? आप images store कर सकते हैं, research paper store कर सकते हैं, अपने word file store कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बोला जाता है, राइट? सो एंड a digital repository which is basically an online archive for storing digital assets which can include archives, moving or still images. Moving मतलब videos, right? Moving मतलब moving images. So videos are basically moving images होते हैं. Moving image हो सकते हैं, still image मतलब photographs हो सकते हैं, manuscripts हो सकते हैं. आप लोग research papers लिखते हैं, research paper पढ़ते हैं, thesis पढ़ते हैं, उसको store कर सकते हैं, कोड स्टोर कर सकते हैं. हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स है, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा कोड्स, क्योंकि आगे के प्रोजेक्ट्स में ये हमें चाहिए होता है, तो कोड्स भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट एंड रिक्वायर स्टोरेज आइदर इन ए टेम्पररी वे और इन ए परमानेंट वे. सो व्हाट क्या होता है, कुछ कुछ रिपोजिटरी ऐसे होते हैं, सपोज 1 साल के लिए आपके सामान यहाँ पे रखा, फिर उसको डिलीट कर दिया. जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके गूगल ड्राइव्स, आपका गूगल ड्राइव भी एक छोटा तरीके से, गूगल ड्राइव शायद सब लोग यूज करते होंगे. कैन आई गेट ए हैंड्स अप और सम एनीथिंग कि आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर. हाँ, तो जो गूगल ड्राइव यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्टोरेज लिमिट होता है. एक स्टोरेज लिमिट के बाद गूगल अपने आप डिलीट कर देता है, राइट? अगर आप उससे खरीदेंगे तो वो रखेगा. सो सपोज 15 जीबी तक का उसका स्टोरेज लिमिट है जनरल एक ईमेल के ऊपर, वो 15 जीबी तक स्टोरेज करेगा. फिर उसके बाद जो जितना एक्स्ट्रा डालोगे, आइदर आप पुराना हटाओ, नया रखोगे, नहीं तो वो अपने आप डिलीट करता जाएगा. ठीक है. तो और कुछ होता है परमानेंट. यू कैन बाय परमानेंट स्टोरेज फ्रॉम गूगल ऑल्सो, कि गूगल डिलीट कभी नहीं करेगा, वो रखेगा. वो खरीदना पड़ता है. ठीक है. बट मेजर थिंग क्या है, जो रिपोजिटरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, मेजर थिंग है कि ये ओपन एक्सेस होना चाहिए. ओपन एक्सेस मतलब आपको, you do not have to pay anything, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा. You do not have to pay anything, and it has a managed persistent way of making research, learning and teaching content with continuing value of both discoverable and accessible. Persistent का मतलब आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, राइट? आपका गूगल ड्राइव जैसा है, आप क्लिक किए, आपके गूगल ड्राइव में आपने जितना डेटा रखा, आपको जब चाहिए, अगर आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज अ पर्सिस्टेंट वे ऑफ मेकिंग. बट गूगल ड्राइव क्या है, एक बहुत जेनरिक स्टोरेज हो जाता है, उसको हम लोग रिपोजिटरी नहीं बोल सकते. ठीक है. रिपोजिटरी होता है, विल कम टू दैट थोड़ी देर में, उसके बारे में बात करेंगे. लेट्स अनदर 4-5 स्लाइड्स के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे. So repositories can be subject or institutional in their focus. और टाइप्स के ऊपर आ जाता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप के रिपोजिटरी हो सकते हैं. ना हमारा मेजर चीज है, हम लोग गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट और इनोवेशन काउंसिल आज फोकस कर रहा है, दैट वी शुड हैव इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी. तो आपके कॉलेजेस से पीएचडी निकलते होंगे, मास्टर के थीसिस बनते होंगे, पीजी के थीसिस जो होते हैं वो लोग बनते होंगे, वो सब आप पब्लिक फोरम में रखिए, ताकि आपके नेक्स्ट बैच स्टूडेंट जब आएंगे उसको रेफरेंस लेके वो अपना थीसिस बना सके, राइट? उनके रिसर्च पेपर्स बना सके. ठीक है. तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज पेइंग और ऑल द एमएचआरडी इज पेइंग लॉट ऑफ एफर्ट इनटू दैट, पुटिंग कंटेंट इनटू इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी व्हिच एनेबल स्टाफ्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट टू प्रिजर्व इट एंड देयरफॉर डिराइव मैक्सिमम वैल्यू. जैसे मैंने बोला कि आप अगर अपने इंस्टीट्यूट के रिपोजिटरी में अपने थीसिस को स्टोर करते हैं, राइट? आप जो पीजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, या फिर डॉक्टर्स होंगे, यू हैव टू क्रिएट योर थीसिस. नाउ लॉट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स दे हैव नाउ क्रिएटेड रिपोजिटरी दैट आप जब पास करेंगे, पीएचडी हो गया या मास्टर्स हो गया, आपका थीसिस वहां पे स्टोर हो जाएगा.
राइट. एंड इट विल बी, जब कोई नया स्टूडेंट या फैकल्टी ज्वाइन करेगा, उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड में यू कैन एक्सेस दैट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एंड यू कैन लर्न कि प्रीवियस प्रोजेक्ट क्या हुआ है, प्रीवियस रिसर्च वर्क क्या हुआ है. ठीक है. So that's why institutional repositories are very important. Then a repository can support research, it can support learning, it can support ideas, right? So I will take you an example. हम लोगों ने एक repository create किया था अपने students के ideas के. So suppose final year के students है, उनको अभी फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट सबमिशन होते हैं. प्रोजेक्ट सबमिशन के बेसिस पे उनको मार्क मिलता है, राइट. तो अभी ऑनलाइन जब कोविड आ गया, राइट, उस टाइम पे तो सबको दे हैव टू गो बैक टू देयर होम टाउन्स. सो व्हाट वी क्रिएट ऑनलाइन रिपोजिटरी वेयर दे कैन सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स, राइट. We can evaluate those projects, we can store that project. So those projects which are very good, we can keep it as, we can showcase, अच्छा ये project अच्छा है, इसको रखो, that can go for a higher research or anything. ये अच्छा नहीं है, then you can tell the student कि भाई इसको थोड़ा modify करो, refine करो, ताकि ये दुनिया को दिखाया जा सके कि ये अच्छा, ये कॉलेज से ये इस तरह का रिसर्च पेपर भी निकला है, राइट. So that's why एक repository can help you support research, learning and different administrative processes, right. And but major thing क्या है, अगर आप लोग एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, ये ओपन एक्सेस होना चाहिए. दैट मीन सपोज हम लोग एक कम्युनिटी रिसर्च बना रहे हैं, आपके कॉलेज के हिसाब से सोच लीजिए, आप अपने कॉलेज के लिए एक रिपोजिटरी बना रहे हैं जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर स्टोर करेंगे, ताकि आपके फील्ड का कोई दूसरा बंदा उसको देख के उसके ऊपर क्या नया इनोवेशन कर सके, कुछ कर सके. ये क्या होगा, आपकी कम्युनिटी के अंदर ओपनली एक्सेस हो जाना चाहिए, राइट. क्लोज नहीं होना चाहिए. दैट मींस यू कैन नॉट, यू हैव टू पे टू समथिंग टू गेट दैट. जैसे पेड रिपोजिटरी होते हैं, जैसे आपके रिसर्च जर्नल रिपोजिटरी होते हैं, जैसे आर्कसीव हो गया, सॉरी IEEE हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, स्प्रिंजर हो गया. देयर यू हैव टू पे सम मनी टू गेट एक्सेस ऑफ दोस जर्नल्स, right. Those are not exactly repositories, they are explorer or drives where you can pay something. Those are paid repository, but general digital repository what government is trailing to do us is basically open repositories, right. So we have already discussed, I don't want to spend much time on this. So एक छोटा सा हिस्सा है, डिजिटल रिपोजिटरी इज जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ योर लाइब्रेरी स्टैक. आपके लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं डिफरेंट स्टैक्स में, राइट. एजुकेशन का बुक यहाँ पे रहा, केमिस्ट्री का बुक यहाँ पे रहा, फिजिक्स का बुक यहाँ पे रहा, इंजीनियरिंग का बुक्स वहाँ पे रहा. सो उसी तरह डिजिटल रिपोजिटरी में डिजिटल आइटम्स ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट स्टैक्स के हिसाब से. ये इमेजेस है, ये रिसर्च जर्नल्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये बुक्स है, ये थीसिस है, राइट. Like that it is maintained, so that these digital items are organized and searchable there. You can search it. मतलब आप ढूंढ के निकालो, आपको ये सर्च करना है, आपने कीवर्ड दिया, जैसे गूगल में देते हैं उसे कीवर्ड दिया रिपोजिटरी के अंदर, आपको सपोज 4 सर्च आया, आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि आपका क्या, which one is more relevant to you, आपके हिसाब से आप उसको चला सकते हैं, राइट. So but digital repository does more than simple house digital objects online. It preserves their integrity in the long term. Integrity क्या होता है, एक अच्छा टर्म है. आप लाइब्रेरी में देखेंगे बुक्स पुराने हो गए, बुक्स के हालत खराब हो जाते हैं, क्या होता है, आप उसको फिर लेके नया बुक लाओ, नया एडिशंस लाओ. बट डिजिटल रिपोजिटरी की ये फायदा है कि you can store that document, that thesis, that research paper, that ideas paper, वो codes हो गया, computer codes हो गया, everything for a very long time, right. I still remember मेरे जो मास्टर्स के कोड्स थे जो मैं लगभग 10 साल पहले किया था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा है. NIT त्रिची के रिपोजिटरीज में अभी भी अवेलेबल है. मैं जब भी चाहूँ लॉग इन करके उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है. तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत मेजर पॉइंट्स है हमारे लिए, राइट. कि व्हाई वी नीड, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोजिटरीज. ओपनिंग अप आउटपुट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, राइट. इसके एग्जांपल्स हम लोग दिखेंगे, ये 1 का एग्जांपल हम लोग दिखेंगे. सो इसलिए 1 को लेट्स पार्क दैट क्वेश्चन पॉइंट 1 एंड 2 फॉर ए नेक्स्ट 10 minutes, right. Second, maximizing the visibility and impact of this output as a result, right. Third, showcasing the institution to interested constituents, prospective staff, students, and other stakeholders. Collecting and curating digital outputs, managing and measuring research and teaching activities, right.
सो बेसिकली क्या होता है, आप एक एग्जांपल देता हूँ. सो आप एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाए, राइट, उसको लाइब्रेरी नहीं रिपोजिटरी बोल रहे हैं, राइट, बट डिजिटल लाइब्रेरी से कहीं आगे रिपोजिटरी है, बिकॉज रिपोजिटरी क्या होता है, ओपन एक्सेस होता है. तो आपको दिखाना है कि यूएस वगैरह में क्या होता है. If you go to US, there are a lot of in universities they have open access libraries or open access repositories, जहाँ पे उनके पुराने रिसर्च पेपर्स हैं, पुराने थेसिस है, पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पे बुक्स कुछ बुक के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, राइट. वहाँ से क्या हो सकता है कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो मेरा जो यूनिवर्सिटी है, मेरा जो कॉलेज है, इतना अमाउंट का डॉक्यूमेंट निकाला. सो आप अगर नैक के प्रोसेस में जानते, सो योर कॉलेज इज नैक एक्रीडिटेड, आई हैव सीन इट. सो अगर आप नैक के प्रोसेस पे जाते हैं, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है आपका रिसर्च इंडेक्स आउटपुट क्या होता है, राइट. एच इंडेक्स, आई इंडेक्स, ये शायद आप लोग जानते होंगे, मैं आई एम नॉट रॉन्ग. रिसर्च इंडेक्स आउटपुट, राइट, जो Yes, sir. हाँ, तो रिसर्च इंडेक्स आउटपुट क्या होता है. अभी एक कॉमन नैक का नैक हो गया, एनवीए हो गया, इन लोग का एक कॉमन चीज आया है अभी कि आप लोग का कितना डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है ओपन, राइट. आपके कॉलेज से कितना रिसर्च पेपर निकला है, आपके कॉलेज से कितने प्रोजेक्ट्स आउटपुट में, कितने प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किया है, लाइक फंडेड प्रोजेक्ट्स हो गया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गया, कंसल्टेंसी किया है, उसका जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपनली अवेलेबल है कि नहीं, राइट. या फिर वीडियो फॉर्मेट में है कि नहीं. सो वो लोग अगर आप इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में रखते हैं, यू कैन जस्ट अ सिंगल क्लिक कॉपी द लिंक, स्टोर टू एनबीए, दे विल सी इट एंड दे विल बी हैप्पी कि हाँ मेरे पास, इनके पास ये सब चीज है. So that is one of the major criteria now for NAC and NBA accreditation when you are getting it. Right. So another part, another 4 part of it's a different importances, right? Providing a workspace of work in progress and collaborative of large scale project. So अभी क्या होता है? So suppose मेरे अंडर 2 बंद PhD कर रहे हैं, right? एक बंदा PhD खत्म किया और वो निकल रहा है, right? If I do not have his PhD outcomes, उसके projects reports, उसके research papers and everything, then the next batch का PhD students आएंगे, I cannot share with them, right? So अगर मेरे पास institutional repository है या digital repository है where I can store that code, okay, so batch number 2022, there is 10 PhD students, these are their thesis, these are their project reports, these are their research papers, so that I can just show to my next batch of students, okay, यहाँ पे आपके सारे पेपर्स और रिसर्च चीज रखे हुए हैं, आप जाके इसको रेफर करो and you start studying it out, right? Second, repository also help enabling and encouraging interdisciplinary approaches of research. So now अभी government क्या बोल रहा है, अभी आप अगर जाएंगे, start understanding different government projects and conferences, they are telling about the interdisciplinary research, right? Interdisciplinary मतलब 2 डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनके बीच में रिसर्च. जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक बायोइग्निशन ग्रांट है, राइट. बायोइग्निशन ग्रांट इज ए बायोटेक ग्रांट. मेरा फील्ड बायोटेक्निक है, राइट. मेरा फील्ड प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं और एक डेंटल मेडिकल के डॉक्टर मिलके एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई किए, राइट. Where we got a grant, a very big grant we got, right, to solve a problem which is medical problem, right. So that is what is interdisciplinary. We are not what, so disciplinary means आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के साथ काम किए, वो डिसिप्लिनरी हो गया. आप इकोनॉमिक्स है बट आप सोशल साइंस के प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री है, आप बायोटेक के साथ काम कर रहे हैं, दोज आर इंटरडिसिप्लिनरी, right? So interdisciplinary, so institutional repository will encourage interdisciplinary research. So that's how what happens. So I can read the research paper of a person of a different department of my university, right? So I can understand, okay, there is a problem statement which I am working, this professor from this other department is also working, can we collaborate? हम लोग collaborate कर ले क्या? Collaborate करेंगे तो जल्दी काम होगा and अच्छा result आए. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस रिपोजिटरीज विल एनेबल एंड एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ रिसर्च, एंड दिस विल आल्सो हेल्प अस facilitating development and sharing of digital teaching materials and aids. So ये जो थर्ड पॉइंट है, this really helps us during this pandemic. ये जो कोविड का पूरा 2 साल 3 साल हो रहा है, ये जो पार्ट हुआ कि डिजिटल टीचिंग मटेरियल, बिकॉज हम लोगों ने 5 साल से 6 साल डिजिटल स्फीयर
क्लाउड में पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव्स में पड़ा हुआ है, वहां से हम लोग डायरेक्टली डेटा लेके उसको स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट को मटेरियल्स दे सकते हैं, those things we can give it, right? Then also we can do one thing, we can support student endeavors providing access to these thesis discussions and location for the development of e-portfolios. E-portfolios are basically your business plans, what we are talking about, that you can give it to them for development, right? You can share your details with your students and everything, right? They can develop further develop that particular projects, right? So that's why this institutional repositories and repositories are very important. Okay. Because what is happening nowadays, government is all across world, in this pandemic और ये जो कोविड का पूरा तो चल रहा है, yet this taught us कि if we have your documents in digital workspace, that means somewhere stored in a website or a drive or a cloud storage, right, or a remote system, then you do not have any problem doing teaching and learning. आजकल YouTube इतना फेमस, आज बहुत सारे लोग YouTube से पढ़ते हैं, right? If you go by the logic, lot of people read from YouTube, right? Because it is readily available everywhere. Now आपके फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो टीचिंग मटेरियल्स है, उनके स्लाइड्स है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर ये आपके स्टूडेंट्स को रेडिली अवेलेबल हो जाए, राइट, विथ ए सिंगल क्लिक, then it will be very easy for them to study even if this kind of situation arise like COVID, right? That's why government is very much focusing and forcing that okay, आप repositories create करो, archives create करो, ताकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करे. Okay. Now let's go understand what is different type of repositories we have, right? One is सबसे major is which is actually very large portion which takes the repository or space, is subject based repository, which can be commercial and non-commercial, single and federated, राइट. कमर्शियल समझते हैं, कमर्शियल मतलब आप पैसा दे के खरीदते हैं, जैसे आपके कोई भी जर्नल का वेबसाइट हो गया, राइट. अगर आप जर्नल के वेबसाइट्स में जाते हैं, आपको पता है कि आप यू हैव टू पे समथिंग. कुछ ओपन एक्सेस जर्नल भी होते हैं, वो नॉन कमर्शियल बोल सकते हैं, बट देन सिंगल होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट का होगा, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट. फेडरेटेड मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट. एक रिपोजिटरी है सपोज केमिस्ट्री का, राइट, तो आप वहाँ पे ओनली केमिस्ट्री के आपको डेटाज मिलेंगे, एक है इकोनॉमिक्स का, या फिर एक है रिपोजिटरी जिसके अंदर सारे मिलेंगे. एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग शोध गंगा के नाम सुने होंगे, जो बहुत फेमस है. शोध गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रिपोजिटरी है, पीएचडी थीसिस एंड मास्टर्स थीसिस का. शोध गंगा वो एक फेडरेटेड सब्जेक्ट बेस्ड रिपोजिटरी. उसमें क्या है, मल्टी इंस्टीट्यूट्स एंड मल्टी स्ट्रीम के रिपोजिटरीज आपको मिलेंगे. या फिर ई ज्ञान कोश जो है अपने इग्नू का, you can get those things from there, right? So what is the nature or properties of subject based repositories? That is, they are spontaneous, self archiving and prevalent, right? Because this particular repositories hold intrinsic value to the scholars, researchers, right? And so just a second. The speaker of the the sponsor of the repository is like to report much of our subject-based repositories have very much intrinsic value for authors, right? Where what you can do, authors come from opportunity to communicate ideas and research early in the form of working papers, preprints, right? Where they can get peer reviews, right? अगर आप लोग BioArchive archive.org का नाम सुने होंगे, those are subject based repositories, archives.org, right? So where what you can do, or SSRN, if you have seen out of this kind of websites, those are basically subject based repositories where you can submit your research papers, preprint journals, right? You can get a comments or peer reviews before submitting to the actual journals, right? Those are basically your subject based repositories, right? And as such, subject based repository are thematically well defined, and they have a lot of services, user statistics are there, meaningful for community.
राइट. इसके बारे में थोड़ा लेट में आएंगे, ये लास्ट पॉइंट के ऊपर विल डिस्कस इट व्हेन आई गिव यू द एग्जांपल, विल डिस्कस. नाउ नेक्स्ट जो फैकल्टी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिसर्च रिपोजिटरीज, राइट. Research repositories are those usually sponsored by research funding or performing organization to capture results. This captures typically publications, books, data, right? Like Springer, IEEE. Then you will go to JSTOR, right? Nature, those kind of things. Those are research repositories because this item constitutes a record of science, standards, and everything. Right, and they are basically sponsored, right? So you pay, the institute pays for them, and the students or faculties can access it, right? So now what happened in this research repository, if you try to buy, take the membership of this, they are very actually very costly, right? For if you are for an individual. Now if your institute takes it, right, your institute take the subscription of this repository, they're usually cheaper, and the students and faculties can directly access from the institute's website, right? um, and this is actually very helpful to doing research. So you will get a data, you want a paper and you have subscription to that repository, you just have to search it and get it and read it, and you can write your own paper, right? uh, so here what you can get research journals and everything. So these are research based repositories. Then there is a third type of repository, which is national repository, and national repositories are usually open source. I gave you an example, आपको example दिया मैंने शोध गंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है शोध गंगा. अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास मोर देन 100 ओपन रिपोजिटरी है. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस पीपीटी के साथ, आप देख लीजिए, लास्ट में है, राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल रिपोजिटरीज बहुत सारे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली ये बाहर के बहुत सारे देशों में बहुत सारे गवर्नमेंट से प्रोवाइड कर रहे हैं. यू कैन एक्चुअली एक्सेस दोस डेटा, राइट. So national repository require coordination more for a federated system. Federated मतलब मैंने जैसे बताया, multiple branch, multiple institutes, and unified, make a unified system. So and these are managed and designed to capture scholarly output more generally, not just a view to preserving record or skills, but also support, for example, in your teaching and learning in higher education, or for a national project or anything, they can do it, right. Similarly, such systems are likely to display scholarly outputs in national languages, right. So आप अगर जाएंगे शोध गंगा या ई ज्ञान कोश की वेबसाइट में देखेंगे आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. यू कैन गेट हिंदी, आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं. सो जनरली मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाता है सिस्टम, बिकॉज इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड इट इज नेशनल सिस्टम्स, नेशनल. एंड anyone could conceive of such national repository as part of a national research library. जैसे हम लोग का इंडिया का है NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, मैनेज्ड बाय IIT खड़गपुर. ठीक है, अगर आपको बहुत सारे बुक्स है जो आप मिल जाएंगे वहां से, काफी कॉस्टली बुक्स है, राइट, जो आपको जनरली नहीं मिलते हैं, राइट. या फिर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जो आपको नहीं मिल रहे हैं, थीसिस से नहीं मिल रहे हैं, तो देन यू कैन गो टू NDL's वेबसाइट, National Digital Library of India. This is done with IIT Kharagpur, right. They are maintaining that library. You can take that library's help, okay, and you can get a lot of data out of it, okay. So such national systems are part of National Research Library that serves scholarly communication in national language. मतलब regional languages में बहुत सारे books भी available है. ऐसा एक example मैं आपको दूंगा, NIT राउरकेला का, right. So these are basically why national repositories are very important, because they are going to help us support different public policies, like opening educational resources for higher education, enhancing public access to knowledge, right. Now anybody can learn lot of things by going to Shodh Ganga or e-Gyan course or NDL's website, right. That's why they are very important. Then comes here where your actually point, जो हम लोग का आज का टॉपिक है, वो लाया करता है, राइट. क्या इंपॉर्टेंस है रिपोजिटरी बनाने का, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी,
जो लोकल रिपोजिटरी है जो आपके कॉलेज के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो national institutional repository contains various outputs of the institutes. Majorly क्या आउटपुट हम लोग कैप्चर करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में, जो होता है रिसर्च रिजल्ट्स और रिसर्च पेपर्स, और जो आपके यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं, राइट, जो पीएचडी थीसिस आ रहे हैं या फिर पीजी के थीसिस आ रहे हैं, राइट। देन ऑल्सो शोकेस आपके फैकल्टीज के जो पब्लिश्ड पेपर्स है, राइट, वो सब. So it is basically a library holding an institutional collection, and it is showcased because it is online. It's online and it is open access, right? A repository may also be an instrument of institution by supporting, for example, internal and external assessment as well as planning, right? So अगर आपको एक बाहर का प्रोफेसर को लाना है, बोलना है कि देखो ये हमारा सिलेबस है, इसको देख के आप क्वेश्चन बनाओ. जनरल प्रैक्टिस है ना, आप बाहर से प्रोफेसर्स को लेते हैं कि आप क्वेश्चन बनाओ या फिर ये बनाओ. सो आप कैसे करेंगे? यू शेयर द सिलेबस विथ हिम, राइट. ही गोज थ्रू द सिलेबस एंड दिस थिंग and make questions, right? So institution, agar all those data are available in your repository, so anyone from outside, you can just share the repository link and he will give you a comment or improvement or anything. आपको कुछ अलग बनाना है, आपके इंस्टीट्यूट में कुछ नया चीज लाना है, you can give a comment, right? So that's why institutional repositories are very much required, right? So that's why there is a director of network information, Cliff Lord Lynch, he told that in 2003 in a public forum of library meeting that, in my view, a university-based institutional repository is a set of services that a university offers to the members of its community. Community मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफर करता है अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, पीएचडी स्कॉलर्स को, for the management and dissemination of digital material created by the institute and its community members. It is mostly essential and organizational commitment to the stewardship of the partnership of this digital materials, including long-term preservation and as well appropriate as well as organization and access. So आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पूरा चीज का मतलब क्या है, ठीक है. जो हमारा लाइब्रेरी है किट का, वी हैव इट्स इन द डी स्पेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सिस्टम, राइट. तो वहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स के साइट्स है जो सब्सक्राइब्ड है, बहुत सारे बुक्स के साइट सब्सक्राइब्ड है. अगर मैं कहीं पे भी इन वर्ल्ड में रहूँ, आई हैव अ लिंक एंड अ लॉगिन पासवर्ड टू दैट सिस्टम, राइट. मैं उसको खोल के पूरा सारा चीज जो भी मुझे चाहिए, राइट. मेजरली हम लोग का जो इंजीनियरिंग है वो IEEE या साइंस डायरेक्ट को एक्सेस करते हैं जर्नल, सो दे आर वेरी कॉस्टली. लेकिन इफ आई एक्सेस थ्रू माय रिपोजिटरी, दैट इज माय किट्स रिपोजिटरी, इट इज फ्री फॉर मी, ओके. थ्रू माय इंस्टीट्यूशनल लॉगिन आई कैन ओपन, मतलब मैं अपना, जैसे आप जीमेल में ईमेल में पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन आईडी डालते हैं, खुल जाता है. इस तरह हमारा लॉगिन एंड पासवर्ड हमको मिला हुआ है, हम लोग उसको लेके login करते हैं and we can access different kind of websites of journals, different kind of websites of books, right, or thesis and everything. That's why institutional repository are very important, right? So let's summarize why it is requirement, what is the logical point of institutional repository, right? Why it is required in institution: centralized distributed activity, framework and infrastructure, permanence can sustain changes, stewardship of digital assets, preservation policy, provide central digital showcase for the research, teaching and scholarship of the institution. These are the, you can say, the mandates which can be taken to create digital repositories for that. Okay, that's the point where we should park this question. Now, how you are going to use? आपको मैंने ये वाला चीज सेकंड थर्ड स्लाइड्स में दिखाया था. सो आई कम बैक टू इसको, जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है इसको यूज कैसे करना, राइट. तो ये रिपोजिटरी जो होता है आपको यूज हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं स्कॉलरली कम्युनिकेशन, मतलब रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेज के लिए यूज कर सकते हैं, आपके डिजिटल मटेरियल को स्टोर करने के लिए. आज मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे जो मास्टर्स पीजी के दिनों के डॉक्यूमेंट्स है वो अभी भी मेरे इंस्टीट्यूट के रिपोजिटरी में अवेलेबल है, राइट. आप नॉलेज मैनेज कर सकते हैं,
रिसर्च असेसमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी बिटवीन डिफरेंट प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज यू कैन कोलैबोरेट, राइट. YouTube cannot be treated as a repository, online repository. No, someone question, Radha Singh, she has asked that whether YouTube can be treated as an online repository. In a way, yes, but no, because YouTube is a unregulated repository. Though there is no regulated regulation to control it, right? So even if you search, suppose what will be the impact of repo rate repo rate increase in by RBI, right? This is the very common news. आजकल बहुत चल रहा है. Repo rate गिरा तो interest rates will be changing, right? So if you search that thing in YouTube, you will get some relevant links, right? But 90% links will not be relevant to it. Right? आधे से ज़्यादा link relevant नहीं है. So YouTube cannot be considered as it what you call federated repository, rather than it is what you call it can be considered as a hub of data hub. You can consider, right? जो रिपोजिटरी होते हैं उसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर डोमेन में आपको डेटा इजीली मिल जाएंगे, राइट? आपको मैनेज है. तो आप अगर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के जो रिलेवेंट डेटा है, YouTube is not exactly be considered as a repository, but yes, it can be one YouTube channel. Now you create an YouTube channel for teaching students a particular thing. That particular YouTube channel you can consider as a repository, right? Okay. That YouTube channel / something is a repository for teaching class 10 student mathematics, right? But if you tell YouTube as it is not a repository. Okay. Thank you sir for your clarification, but sir जो कॉलेज वेबसाइट है क्या वो ऑनलाइन रिपोजिटरी का पार्ट है या एग्जांपल हो सकता है? आपके कॉलेज जो कॉलेज वेबसाइट पे भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी न्यूज होती है, सारी वीडियो जो भी लेक्चर है वो सारे वहाँ पर होते हैं. हाँ, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं. तो ऑनलाइन रिपोजिटरी हो गया. क्योंकि सर जैसे आईआईसी के उसमें हमारे पास डायरेक्शन है कि आप अपनी ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाइए. सपोज बिजनेस प्लान के लिए बनाना है तो सर आप किसी के लिए भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आपने बताया जैसे पर्टिकुलर डोमेन में बनता है, तो कॉलेज वेबसाइट में एक पर्टिकुलर डोमेन में है तो हम वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या स्टार्टअप है, और जो भी अगर कोई न्यू आइडिया कोई स्टूडेंट लेकर आता है तो वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं उसको. आप कर सकते हैं. आप डेडिकेटेड वही कॉलेज वेबसाइट में एक डेडिकेटेड लिंक डाल दीजिए, एक आइडिया रिपोजिटरी करके, उसको क्लिक करके वहां पे सब लोग जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सर. बेसिकली क्या है, रिपोजिटरी टूल्स होते हैं कुछ, राइट? वो इफ यू स्टार्ट उसका टीचिंग एक्चुअली बेसिकली 10-15 दिन का पूरा कोर्सेस है. ठीक है, मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ कहाँ से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको दे सकता हूँ. आप लोग गूगल क्लासरूम यूज किए हैं कोई? Yes sir, we are using Google Classroom for our online classes. Yes. So ये पहले बहुत फेमस नहीं था, अभी 2 साल में बहुत फेमस हो गया है गूगल क्लासरूम, राइट? So I am one of the oldest user of Google Classroom in Eastern India. तो गूगल का मुझे एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, 2014 से यूज कर रहा हूँ. तो उसमें क्या होता है, अगर आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे वहाँ पे आर्काइविंग ऑप्शन, आप अपने सारे पुराने क्लासेस को आर्काइव कर सकते हैं, राइट? तो और अगर अभी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कि मैं फलान 4 सेमेस्टर पहले क्या पढ़ाया था, देन यू कैन सिंपली गो टू द आर्काइव and get it downloaded. So that can also be treated as a repository for your classrooms. Okay sir. So benefits of institutional repository, मेजरली जो होता है रिसर्च रिपोजिटरी. अभी मैं बताता हूँ कि आपको कि गवर्नमेंट जो आईएएससी बोल रहा है रिपोजिटरी बनाओ, उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूंगा एक्चुअली होता क्या है. शोकेस ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स आउटपुट, इंक्रीज साइटेशन फॉर ऑथर्स. आपका मेजर क्या है, नैक या एनबीए के जो भी जाते हैं, आपके इंडेक्स कैसे, योर इंडेक्स इंक्रीजेस इफ योर साइटेशन इंक्रीजेस, राइट? आपके एच इंडेक्स कैसे बढ़ते हैं? आई थिंक यू आर क्लियर. एच इंडेक्स आई इंडेक्स पता होगा सबको. तो एच इंडेक्स और आई इंडेक्स कैसे बढ़ते हैं, जबकि आपके पेपर के साइटेशंस बढ़ते हैं, ठीक? तो अगर आपका पेपर इजीली एक्सेसिबल है तो उसके साइटेशन बढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आप सपोज आपका एक पेपर पब्लिश हो गया, राइट,
वो जर्नल में पब्लिश हो गया, राइट। अगर आपने उसके लिए पे किया नहीं किया, जर्नल में पब्लिश हो गया। लेकिन जर्नल साइट जनरली पैसा लेता है पेपर को दिखाने के लिए, ठीक है। लगन आप इसको आपके रिपोजिटरी में रख दिए, तो सपोज आपके क्लास का नेक्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट आया, वो उस रिपोजिटरी से डायरेक्ट वो पेपर एक्सेस किया और उसने उससे अच्छा पेपर लिख डाला, राइट, आपके पेपर को लेके, तो ऑब्वियसली आपका साइटेशन बढ़ा, ठीक है। तो एंड उसका बेनिफिट क्या है, 24 आवर एक्सेस। आपकी जिस वेबसाइट है, वेब एनेबल डिवाइसेस है, उसके थ्रू आप 24 आवर उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन you can put persistent URLs. Persistent means it will not go down. And it is also effective marketing tool. As you were talking about business ideas and plans, right? So now suppose your IIC is majorly focusing on create startup ecosystem in India, right? Now suppose आपके कॉलेज से चार ideas आए, बहुत unique ideas, right? And you have stored all the unique idea in a simple repository, right? और आप Google Drive बना लो या Google Form बना लो, कहीं पे store कर लो. You can simply send the link to your investments profiles, right? Startup क्या है? Basically startup में अगर कोई invest नहीं करेगा तो startup नहीं है. आप directly suppose आपने किसी से connect किया कि okay, he is ready to fund those students. Is ready to fund those students, then you can simply create a simple repository कि इसका ideas ये है, इसके PPTs ये है, इसके outcomes ये है, and send to that investor. He will go through all and he will choose. Let he choose, चार में से दो को choose किया, दो plans को choose किया, बोला मैं इनका ideas सुनूंगा, और तो इसमें क्या होगा, आपका ही फायदा है। आप अभी क्या है, स्टूडेंट से सामान लो, उसको दो, राइट, ये टाइम लगेगा। अगर आप स्टूडेंट को बोलो ये मैं गूगल फॉर्म दे दिया, तो उसके अंदर सारा you put all the things. So now for that, for you, this act as a small repository which you can send to the investors, right? Those plans. So that's why these repositories are very helpful for institutes, right? Examples. आप आरसीप के नाम, ARXIP के नाम जानते होंगे, जो दिस इज कॉमन फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। आपको प्री प्रिंट जर्नल्स जो प्रिंट में नहीं गए होंगे, बहुत सारे जर्नल्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। सिमिलरली बायोआर्कशीप से, बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल साइंस के लिए, SSR है, सोशल रिसर्च नेटवर्क से, रिसर्च पेपर्स इन इकोनॉमिक्स, REPC है, वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनल रिलेटेड रिपोजिटरी है। PubMed है फॉर पब्लिकेशन इन मेडिकल साइंसेस एंड डेंटल इंटरडिसिप्लिनरी पैथोलॉजिकल सर्विसेज, यूरोप PMC है, OpenDOIR है, राइट, ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। सिमिलरली आपका विकिपीडिया is also a very big repository of a lot of knowledge bases, right? So and GitHub है, so GitHub maybe you heard or may not have, सुने होंगे नहीं सुने होंगे। GitHub basically is a code repository, ठीक है। आपके जितने दुनिया के बड़े बड़े IT कंपनीज है, कोडर्स है, प्रोग्रामर्स है, everybody has a GitHub account, right, where they store their codes, right? What you can change that, आप कोड क्यों स्टोर करते हैं कि सपोज मैंने आज 4 लाइन का कोड, कल मैं 5 लाइन का कोड लिखूंगा, ठीक है, मैं सबको ऐड करता जाऊंगा। एट एंड में क्या आई कैन सी कि मैंने कहाँ पे क्या चेंजेस किया। वो GitHub का फीचर है, ऑटोमेटिकली आपको वर्जन दिखाता जाएगा। आप वर्जन 1 में ये लिखे थे, वर्जन 2। एंड GitHub खाली कोड रिपोजिटरी नहीं है, मैं पहले आपको बोल दूं, GitHub खाली कोड रिपोजिटरी नहीं है। GitHub में लोग रिसर्च पेपर्स रखते हैं, GitHub में लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, राइट। इट्स वेरी इजी एंड बहुत फायदेमंद है, राइट। बट उसका सेशन अलग होगा, मतलब आपको कैसे रिपोजिटरी बनाना है, GitHub में कैसे काम करना है, इट्स नॉट 1 घंटे का बात नहीं है, राइट। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स के रिपोजिटरी है, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स डेटा सिस्टम, राइट, नासा का STI रिपोजिटरी, NTRS बोलते हैं, बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी डिजिटल लाइब्रेरी, क्योटो यूनिवर्सिटी रिसर्च इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी डिजिटल रिपोजिटरी, ई स्कॉलरशिप रिपोजिटरी, राइट। एंड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ थीसिस, PhD थीसिस का है NIT राउरकेला's e-thesis, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको क्लिक करके। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। Yes. सर रिसर्च गेट भी फिर ऑनलाइन रिपोजिटरी हुआ, उसमें हम अपने रिसर्च पेपर शेयर करते हैं, अपने रिसर्च प्रीप्रिंट शेयर करते हैं, हम Yes. उसमें अपने आइडिया भी शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप बायोआर्कशीप में तो वही होता है, आर्कशीप में वही होता है, ARXIB, राइट।
लेट मी जस्ट शोकेस. आप लोग को ये वेबसाइट दिख रहा है अभी? Yes, sir. Page. ई थीसिस ये वेबसाइट दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. Now this is ई थीसिस at NIT राउरकेला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राउरकेला. तो ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द नहीं सबसे बड़ा थीसिस रिपोजिटरी है. ठीक है. एंड इफ यू गो यू कैन सर्च बाय दिस ईयर वाइज, राइट. देखिए जो 2021 में 51 थीसिस आए, आप क्लिक कर सकते हैं, राइट. एंड ये देखिए ये नंबर के हिसाब से इसके थीसिस है. ठीक है, राइट. साइटेशन के हिसाब से है, और आप सुपरवाइजर के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं. You can browse according to supervisor, you can browse according to year, right, department, subjects, all these things you can see, right. ये one of the largest thesis repository of India है, ये thesis NIT राउरकेला. Apart from that, one of the government का सबसे बड़ा research लाइब्रेरी ये जो है वो है शोध गंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. ठीक है. इसमें आप इफ यू कैन सी there is 3,58,466 thesis. This much synopsis and this is fellowships documents are available, right. And you can get a lot of guide and tutorials, right, UGC notifications, everything. So this is example of national repository जो हम लोग बात कर रहे थे, national repositories के बारे में, right. ये one of the largest national repository, और आप इसके अंदर बहुत सारे चीज सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट. सपोज यूनिवर्सिटी, लेट मी शो यू एन एग्जांपल. थोड़ा स्लो है आज साइट. सो सपोज यू विल गो. सो यहाँ पे क्या है आपका, आप लोग भी शोध गंगा को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट. यू कैन कंट्रीब्यूट. सो यू कैन सी दैट इन यूनिवर्सिटी मद्रास is has the largest number of contribution, 13,302. तो उसके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में देखिए 2086 नंबर ऑफ थीसिस, राइट. सो मेनी थीसिस आर देयर, राइट. तो आप लोग को रिसर्च में बहुत हेल्प हो जाएगा, पीजी रिसर्च में पीजी स्टूडेंट्स को देने के लिए आपका दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ओके. नाउ लेट गो बैक टू माय slide again. Sorry. Okay, so as you can see that we can see about example I show you that national repository. So similarly, if you click on this particular link, I will share you the slide. You will get all the repositories of India, right? All the institutional repository updated till 2016. अभी नया और भी आ चुके हैं, right? But you will get maximum repository details from this link. Right. So now let's come to the last one. Okay, how to make a repository? There are lot of what you called platforms, but these are the 4 major platforms which has been used across the globe to create repositories. One is Digital Commons. Okay, Digital Commons. Excuse me, someone's mic is on. Can you please make it mute? Thank you. So one of the major is Digital Commons, right? Digital Commons. आप लोग विकिपीडिया देखे होंगे. विकिपीडिया के अंदर कोई भी अगर फिगर है, आप एक बार जाके उसको क्लिक कीजिए, राइट. अगर आप विकिपीडिया में होंगे तो वहाँ पे जब आर्टिकल के अंदर फिगर्स होते हैं उसमें क्लिक कीजिए. सो सी द फिगर इज स्टोर्ड इन डिजिटल कॉमन्स, राइट. सो विकिपीडिया इज बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ डिजिटल कॉमन्स, राइट. सो ये एक प्लेटफॉर्म है. उसके अलावा ई प्रिंट्स एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलप्ड बाय साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूके, राइट. एंड ई प्रिंट्स इज अ मेजर रिपोजिटरी फॉर सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स. देन अनदर वन इज फेडोरा कॉमन्स. ये इतना यूज नहीं होता है. डेवलप्ड बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी वर्जीनिया बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल एक्सटेंडेबल डिजिटल अपडेट एंड रिपोजिटरी. ये भी इतना कॉमन, ये इतना पॉपुलर नहीं है. बट सबसे पॉपुलर जो है
दिस इज दिस वन। इंडिया का आप जो शोध गंगा मैंने आपको दिखाया या फिर NIT राउरकेला का दिखाया, दे ऑल आर मेड यूजिंग दिस डी स्पेस, ओके, डिजाइन्ड बाय MIT एंड Hewlett Packard, इट्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, राइट। डी, सो आपको अगर डी स्पेस के टीचिंग के बारे में जानना है, हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू वर्क विद डी स्पेस, हाउ टू क्रिएट रिपोजिटरीज एट डी स्पेस, देन I can share you the YouTube links to Dr. Sudan, and he can share with you. Okay, so because it will take solid 1 week's teaching time and making time to create a simple repository using DSpace, right? Because there is उसके अंदर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, ठीक है। तो डिजिटल कॉमन्स, सो बस इसके वेबसाइट्स के लिंक्स दे दिए यहाँ पे, डिजिटल कॉमन्स। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ई प्रिंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, फेडरल कॉमन्स है इसके बेनिफिट, एंड डीस्पेस, ये सबसे कॉमन है। अगर आप लोग यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया था गवर्नमेंट्स की रिपोजिटरीज, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, सॉरी why it's not going, sorry, no, sorry, just a second. Okay, ये रिपोजिटरी, सो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं thesis of NIT Rourkela, you will see it is created using DSpace, okay, it is created using DSpace, okay. So this is Sodh Sangra, the name of the repository of NIT Rourkela, Sodh Sangra institutional repository. इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है, you can discover the subjects, you can discover different submission guide, all this. Sir, your voice is not audible, sir. I think sir has lost the connection and he will be joining. Sorry, I was disconnected. Okay, sir. No, I joined back. Okay, sir. So I joined back. So sorry, I disconnected. Now I'm joined back. Okay, sir. Not an issue, sir. Yes, sir. रिपोजिटरी है, आप वेरी फंडामेंटल आप स्टार्ट कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, ठीक है, बनाना, जो विच यू कैन ऑलवेज कीप इन हैंडी,
उसके अलावा आप लोग you can make it using specified softwares जैसे DSpace हो गया, Fedora हो गया या फिर Digital Commons हो गया. उसके जो टॉपिक्स है वो that can you can take different sessions. अगर आपको चाहिए तो मैं वो how to DSpace सबसे common है, right? How to make using DSpace repository using DSpace. I will share you the online resources with this PPT. Okay. Thank you for giving the time and patience to listen. Thank you very much, sir. Hello. Yes, thank you. Okay. So now is a question answer session. Yes. Participant, if you have any query, if you have any question, then you can post your questions in the chat box, or you can directly ask the sir. Now, what I will do that along with this PPT, I will also share the links where you can get examples how to install DSpace and work. Okay, sir. Okay, sir. So, Sugan sir, so shall we move forward, or is and there also I will share you query? I will mail you back. Yes, sir. Yes, sir. Any student has any question, any doubt, or anything they want to ask? It's a very nice opportunity for you all to clarify your doubts. Kindly come forward and ask your questions. Any student, anyone, any faculty member, anyone has any question? Okay, I think there's no more question here. Sir, I just wanted to ask you one thing. Like, can you give us a kind of next session in which you can demonstrate us how to develop any online repository which can be, have. Yes, but right now for this our examination is going on. I can definitely give another 1 month down the line. Okay, because this time our examination started for students. It will go till June end. Okay, so exactly right now, because from next June onwards, so invigilation duty वगैरह आ जाएगा. I will be busy in there. Okay. Anyway, sir, we are looking forward to you into the. Sure, if I will share you basic details, right? You try, then else I will take one session, or else I will ask someone to take if it is okay. I can ask our digital repository heads, librarians, they can take also. Yes, sir. Yes, sir. We will. I can patch you through them. Okay, sir. Okay. Okay. So I'll ask them, the head repository head who is there. I can ask them. Okay, sir. Okay, Neeta ma'am, I think we can. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. So now we are moving to the end of this program. Now I request Dr. Nishi Seth for formal vote of thanks. Dr. Nishi Seth. Thank you, Neeta. Nishi, are you there? Yeah. Yeah. Am I audible? Yeah. Okay. Good evening, everyone. It gives me a great pleasure to express my heartfelt gratitude on behalf of the Institution Innovation Council of SS Khanna Girls Degree College, established under the guideline of Ministry Innovation Cell, Ministry of Education, Government of India. First and foremost, I would like to extend a heartfelt thank to our session's distinguished speaker, Dr. Sambit Prasad Kar, Assistant Professor, School of Electronics Engineering, Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar. Thank you, sir, for sparing your time with us and enlightening us with knowledge and experience on the theme. I would like to thank our principal and president of IIC, Professor Lalima Singh, for her able guidance and encouragement. I'm also thankful to our senior faculty member of IIC, Dr. Manjari Shukla and Dr. Meenu Agrawal, for their blessings and support. And my thanks to the member of IIC for your unwavering support and collaboration. Last but not the least, I would like to extend my thanks to all the participants. And once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you, Nishi. Thank you once again, sir, and thank you all the participants. Thank you, sir, for very informative session. Yeah, it was Can we
Ma'am, So can we sir, request all the something? participants to switch on their camera for a photo session? Okay. Yes, sir. Yeah. Sir, kindly please share your PPTs, sir. Yeah, absolutely, It absolutely. was really very nice May lecture. I request all the participants to kindly switch on your camera we can have a group photo. Sukant sir, please, you take the print screen, huh? Yeah, I will take it. I think all the participants, please switch on the camera. We are waiting. ये screen share option पहले बंद कर दीजिए sir. सुगंध sir. Screen share वाला option, yes. Okay. Yes, I am also. All the participants are requested to kindly switch on your videos, please. Screen participation बंद हो गया ना सर वैसे? मेरा Yes, बंद- yes. Oh. Okay. Students, please switch on your videos. No matter. Actually, many participants have left the meeting. Okay. I have taken the screenshots. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you Thank all. you, sir, for Thank your you. nice lecture. Thank you so much, sir. Thank you.